and they are at the तुम Sati temple ऑलरेडी site. सती टेम्पल पे हो मुस्कान। मुस्कान तूने गोइंग ठीक टू से पढ़ा नहीं ना। सती टेम्पल सर पूरा पढ़ा है। रुक एक मिनट रुक जा। हाँ आज हम डीडी पे बात करेंगे और जीओआर पे बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। Okay, sure. मेरे पास एक और पीडीएफ पड़ा है टीएटी का, शेयर कर दूं वो भी। Yes, sir. Yes, sir. ओके मुस्कान तो ध्यान से सुन। हाँ योर ग्रुप ऑफ एज मेनी एज यू आर, तो अज्यूम कर लो उसमें तुम 10 हो, क्योंकि एसएसजी में कितने लोग रहेंगे तुम्हारे ग्रुप में? 10, ठीक है। यस सर। कमिंग फ्रॉम भोपलवाला विलेज गोइंग टू सती टेम्पल ऑन योर साइकिल एक्सपीडिशन। कहाँ से आ रहे हो? भोपलवाला से। जा कहाँ रहे हो? सती टेम्पल। एज यू रीच देयर, तो तुम अब कहाँ पहुंच गए? सती टेम्पल पहुंच गए तुम। अब समझ में आया तुझे? वन पर्सन केम फ्रॉम, अब तुम यहाँ पे हो, भिंड विलेज से एक बंदा आया और उसने तुम्हें कुछ बताया। क्या बताया उसने? उसने बताया कि few terrorists are planning to blow up the railway bridge at Chambal River at 1300 hours, ठीक है। ट्रेन फ्रॉम, अब ये जो चंबल ब्रिज है यहाँ पे टेररिस्ट इसको ब्लो करने वाले हैं 1 बजे 1300 आवर्स पे, यानी कि 1 बजे दिन में, ठीक है। अभी टाइम कितना है? 11। ओके तो टाइम अभी 1100 है। 1300 पे ट्रेन जाएगी, 1310 पे ट्रेन जाएगी और 1300 पे वो लोग ब्रिज उड़ा देंगे। ये प्लान है उनका एज ऑफ नाउ, ठीक है। समझ में आ रहा है मुस्कान? A train from Dholpur. They are also planning to plant a bomb under the stage of local MP of Dholpur is coming at 1400 at Goregaon. उनका एक और प्लान है कि यहाँ पे जो लोकल एमपी आ रहा है उसका हम लोग वहां पे भी बॉम्ब लगा के, और लोकल एमपी में जितने लोग आए होंगे और लोकल एमपी जो भी होगा उसके साथ उसको उड़ा देंगे। अब समझ में आया तुझे? यस सर। अब क्या है भोपाल पे ही होते तो वो 25 किलोमीटर कंसिडर करते कि नहीं? होते क्या, होते का कोई मतलब नहीं है ना मुस्कान। जैसा सिचुएशन है वैसा रिस्पॉन्स होगा। अगर तू भोपाल वाला में है 25 किलोमीटर है तो साइकिल पे तो आने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा। इन दैट ऐसी सिचुएशन में तुमको कोई ना कोई गाड़ी दी रहेगी। समझ में आया? सर आई हैव अ डाउट। सर एक डाउट था। रुक एक मिनट रुक। द टेररिस्ट आर प्लानिंग टू हाइड इन द मैंगो ग्रोव। कहाँ छुपे हुए हैं? यहाँ पे छुपे हुए हैं, ठीक है। आगे चलो, आगे क्या कह रहा है? At that moment, one person came from Bhind village and told you that a bus had fallen in the Chambal river. उसी समय एक बंदे ने बोला कि भैया एक बस गिर गई है। कहाँ? चंबल रिवर में, यहाँ पे। तो एक और बंदा आ गया स्टोरी में, है ना। And crossing, as you moved out, one of your friends in the group fell down and his leg got fractured. तो कितने काम हो गए? एक काम हो गया ट्रेन के बारे में बताना है, एक काम वो एमपी के बारे में करना है, एक काम आपके फ्रेंड का भी टांग टूट गया, और एक आपकी बस गिर गई। समझ में आया? यस सर। टेलीफोन फैसिलिटी डिस्टर्ब, टाइम इज 1100। अब तुम क्या करो? हाँ अब बोल, अब बोल तू। और जो गोरगांव है उधर से कुछ डायरेक्ट रूट तो है नहीं? क्या बोल रही है तू? विलेज गोरगांव कैसे पहुंचेंगे? वो हम करते हैं। तूने अभी सॉल्व किया इसको? हाथ सॉल्व किया तो फिर यही चाहता हूँ कि विलेज फील्ड से और विलेज ये गोरगांव विलेज है मैं यहाँ अभी इसका सोल्यूशन अभी नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज पहले तुम सॉल्व कर लो, लिख लो, सब लोग कर लो। मैं बता दूंगा तो फिर तुम वही करने लगोगे। समझ रहे हो मेरी बात? है ना? सर बट एक जस्ट डाउट था। गिव यू एन आइडिया। मान लो तेरे को सती टेम्पल से गोरेगांव आना है,
मान ले रास्ता नहीं है तो तू वॉक कर सकती है कि नहीं? सर वो जो रेलवे ट्रैक है हम उसे क्रॉस कर सकते हैं। रेलवे ट्रैक क्रॉस करके उस तरफ नहीं जा सकते हैं? जी, जा सकते हैं कि वो मतलब वैसे देखे तो रेलवे क्रॉस करना सेफ नहीं होता, तो मुझे लगा ऐसे कहेंगे कि आप रेलवे क्रॉस कैसे कर रहे हो, तो मान ले तेरे को सती टेम्पल से गोरेगांव जाना है, बीच में रेलवे ट्रैक है, यू कैन नॉट क्रॉस इट। तुम रोड रोड क्रॉस नहीं करते हो रास्ते में? यस सर। क्या बात कर रहे हो तुम, ऐसी अजीब बात करते हो। आए समझ में? तो इसको सॉल्व कर लो, सब लोग अपना अपना डाल दो, फिर मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन बता दूंगा। बट वन पर्सन हु रोट इन द बिगनिंग, क्या नाम था उसका, सबसे राजीव, अच्छा लिखा उसने। Yes, sir. It was good. It was good. Only he was writing MLA for MP. It was MP, right? ठीक है? तो लाइक हाँ बोलना। तो हाँ सर, मतलब हम लोग ना ऐसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने ये बोला था कि अगर रिवर दिया है या लाइक हाईवे दिया है तो यू कैन आस्क द जीटीओ कि भाई हम लोग क्या फेरी अज्यूम कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग उसमें गाड़ी अज्यूम कर कुछ सकते हैं? तो assume नहीं करना है, वहां पे लिखा होगा फेरी पॉइंट, बोट पॉइंट, ऐसे लिखा होगा। ओके। अगर लिखा है तो एज्यूम करो, अगर नहीं लिखा है तो फिर आप क्रिएट कर लो। सर वहाँ पे लिखा नहीं था, बट एक्चुअली बोर्ड जैसा स्ट्रक्चर कुछ बना हुआ था रिवर में। वो बस थी आई गेस, मेरे को भी लगा वो फेरी थी, लेकिन फिर वो बस गिरी हुई है, बस। तो सर रिज्यूम कर सकते हैं ना बोर्ड का कि कैसे? बोट से क्या होगा, बोट मैन भी तो चाहिए। तो अगर सर बोट है तो फेरी वाला भी हो ही गई। तो वो लिखा होगा फेरी पॉइंट, ऐसा कुछ लिखा रहता है। ओके, इट इज वेरी क्लियरली रिटन, है ना? राइट। सर एक डिस्कशन और डाउट था। हाँ प्रिंस, हाँ बोलो। सर जैसे कई बार छोटी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे बस का मिरर टूट गया साइड वाला, तो वो उसको कराने एड्रेस करने की भी जरूरत है? बस का मिरर टूटा है तो बस तो यूजेबल है ना? हाँ बस यूजेबल है, पर कई बार क्या होता है ना सर, ग्रुप में कुछ बंदे ऐसे हो जाते हैं जो उस चीज के लिए भी बस को रिपेयर या फिर वो सब कराने दे रहे हैं। यार तो तो यू तो वो वो तो तुम्हारे लिए, वो तो तुम्हारे लिए, वो बंदे तुम्हारे लिए गिफ्ट हैं, गिफ्ट ऑफ गॉड आए हैं, उनको करने दो ऐसी मूर्खताएं। उनको थोड़ा ओके। लॉजिकल देके समझाने की कोशिश करो कि जेंटलमैन, द हाँ टास्क एट उनको मैंने ये बोला कि जैसे हमारे पास हैंड। बास्केटबॉल मैच से आ रहे थे तो टेप था, तो टेप लगा देंगे, ज्यादा से ज्यादा कितना ही होगा यार फर्क। ये भी बोल सकते हो कि जेंटलमैन, द टास्क एट हैंड इज मच मोर अर्जेंट देन रिपेयरिंग द स्क्रीन और द मिरर। वी मस्ट फर्स्ट एड्रेस द टास्क एंड देन थिंक अबाउट दिस। आप लॉजिकल बात से समझाओ उसको, और अच्छा है यस तुम्हारे सर। लिए वो ना समझे। ओके, एंड एक और डाउट था सर इसी में कि ना। और भी बातें करेगा हाँ सर। तो तुम्हारे लिए अच्छा है। सर इसमें ही एक और डाउट ये था कि जैसे कई बार ना वो बस का टायर पंचर हो जाता है, तो हमें अपने बंदे भेजने हैं या फिर सर वो ड्राइवर ही खुद, अगर जो बस के साथ है आपको तो ड्राइवर आया है, तो हम उसको एज अ 11th पर्सन कंसिडर करके उसे भेज सकते हैं और खुद अपने तो बस इंपॉर्टेंट आई, टास्क ले सकते हैं? बस लेके आए तो ड्राइवर तो आया है, यू कैन नॉट डिनाई दैट। यस सर। तो वी कैन सेंड वन पर्सन विद द ड्राइवर। हाँ सर, वही मुझे पूछना था कि और मान भेजना लो बस जरूरी का भी है? टायर पंक्चर हुआ है तो उसका स्टेपनी हम चेंज नहीं कर सकते खुद से? हेल्प कर सकते हैं ड्राइवर अ, की चेंजिंग द सर कई बार स्टेपनी। वो बोल देते हैं कि अवेलेबल नहीं है, तो हमने तो ऐसा भी किया था अपने उसमें जीपी में कि। नहीं, मान लो लिखा है कि ओ, अवेलेबल नहीं है, ठीक है, हाँ सर। तो फिर तो नहीं है ना, फिर तो लिख रहा है वो, अदरवाइज गाड़ी में हाँ स्टेपनी तो रहती है। वो तो है सर, तो हमने उसमें ये चीज सॉल्यूशन बनाई थी तब कि ड्राइवर है और ऑफ कोर्स हम बच्चे हैं, तो हमारे साथ एक टीचर भी होगा, तो हमने उन दोनों को भेज दिया था कराने के लिए। सर आप बच्चे हैं तो टीचर लिखा है कि टीचर के साथ गए हो? सर अगर स्कूल ट्रिप है तो ऑफ कोर्स बच्चों के साथ एक टीचर तो जाता ही है। स्कूल ट्रिप है ऐसे लिखा है? हाँ सर, मतलब वो बताया था कि शांति नेशनल स्कूल से वो बास्केटबॉल मैच खेलने जा रहे हैं, मेडल्स जीत के आ रहे हैं, वैसा करके। और क्या क्या, कौन किसके साथ जा रहे हैं? वो उनने ये नहीं बताया था किसके साथ जा रहे हैं, पर अगर हाँ सब तो ये बच्चे हैं तो ऑफ कोर्स एक टीचर। जबरदस्ती टीचर को घुसा ओके। दे और टीचर को काम दे रहे हो, खुद हीरो बने हो, फिर टीचर हीरो बनेगा ना, तुम क्यों हीरो बनोगे? वो नहीं तुम सर, तो वो टीचर पंचर वाला काम तो कर ही सकता है, मतलब ऐसा किया था हमने। टीचर तुमसे क्यों ना कराए पंचर वाला काम, और वो क्यों ना हीरो बने? वही बात सही है सर तो आपकी। मत लाओ टीचर को, अगर नहीं लिखा है तो मत लाओ। ठीक है सर। यू एज यंग एंड ब्रेव व्हाट विल यू डू, है ना? ग्रुप यस सर। डिस्कशन पे चलते हैं। ग्रुप डिस्कशन के किसी भी जीके टास्किंग में आप दो तरीके से उसको समझिए। मीन क्या है ना, जीटीओ हम समझते नहीं है, हम खाली ना वहां पे
हल्ला हंगामा करने में लगे रहते हैं और ये जितने लोग हैं ऐसे ही हल्ला हंगामा करवा के मूर्ख बना के भेज देते हैं बच्चों को। आप कंसेप्चुअली समझिए कि कोई भी ग्रुप डिस्कशन के दो आयाम होंगे। ग्रुप डिस्कशन हो, जीपीई हो, एनी ग्रुप टास्क हो, देयर विल बी टू dimensions. Whose dimensions will be the content and second dimension will be the conduct. कंटेंट में ग्रुप डिस्कशन का क्या होईल क्यों दिख सकता है? रीजनिंग एबिलिटी दिखेगा है कि नहीं? नॉलेज कंटेंट का मतलब ग्रुप डिस्कशन के लिए कंटेंट क्या होगा? तो नॉलेज ही तो होगा, राइट? नॉलेज सर एंड ऑर्गेनाइज करके बोल रहा है वो तो फिर। हाँ, नॉलेज एंड एक्सप्रेशन, राइट? दो ही चीजें हैं। यस सर। यानी कि रीजनिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ओनली टू थिंग्स विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कंटेंट। कंटेंट के दो ही आयाम बनेंगे, है कि नहीं? सर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आ सकता है क्या थोड़ा? रुको एक मिनट, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी का जीडी में क्या मतलब रोल है? ऑर्गेनाइजिंग द थॉट्स, organizing the हाँ सर thoughts is वैसे। power of expression. ओके। Organizing the thoughts is power of expression. Now, from where will the thoughts come? As I told you, power of expression has two dimensions: clarity of thought and ease of expression. Clarity of thought will come from reasoning ability, more knowledge, more thoughts, more ideas. है कि नहीं? More knowledge, more thoughts, more ideas, and you can express better. ये बात मानते हो दोस्तों? यस तो सर। आपको नॉलेज पे काम करना चाहिए। मैं बार बार शुरू से बोल रहा हूँ, मैंने ये भी बोला है कैसे करना है, कौन से वीडियोस देखने हैं, कौन से न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं। आप प्लीज इसको बिल्डअप करो। कंटेंट पार्ट इतना ही है, रीजनिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन, दो ही OLQs। कंडक्ट में बहुत सारे OLQs आपके डाउट में आएंगे या ओपन होंगे। सोशल अडेप्टेबिलिटी मेजर, सोशल अडेप्टेबिलिटी होगा। देन आपका ability to influence the group, how are you able to take the group along with you, वो आएगा। देन आपका लाइवलीनेस आएगा, है ना? कॉन्फिडेंस आएगा। और क्या आएगा इसमें? मेंटल स्टैमिना, हाउ आर यू एबल टू टेक दैट प्रेशर। जब आपके खिलाफ कोई बोल रहा है तो आप कैसे उसको हैंडल करते हैं। मेंटल स्टैमिना, डिटर्मिनेशन, ड्राइव, हर चीज इसमें आ सकती है कंडक्ट में। और ये फर्स्ट टास्क है, फर्स्ट टास्क है, राइट? यस सर। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। एवरीबॉडी गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। फर्स्ट टास्क है, आपकी सारे OLQs वहां पे ओपन होने चाहिए। You should come across as a lively, vibrant, confident, strong personality, full of energy, josh, enthusiasm. So मैं एक बार आप एक चीज जो मैं आपको बोलता रहता हूँ, what kind of a person you should be, what kind of a person you should be trusting, believing and kind person. मैं बोलता नहीं ये बात? What kind of personality you should show? Vibrant, josh, enthusiastic and full of energy. आप देखो ग्राउंड में हो, जब आप GTO ग्राउंड में आ गए, you should look very vibrant, enthusiastic, जोश टाइप, energetic. ठंडा बंदा नहीं चाहिए। कैसा बंदा नहीं चाहिए दोस्तों? ठंडा। ठंडा बंदा, कोल्ड है, एकदम रिक्लूस है, लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड है, नॉन इंटरेस्टेड टाइप बंदा। कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? डल सा नहीं लगेगा? बोलो। यस सर। क्या GTO उसके बारे में क्या सोचेगा? अच्छा आप ऐसे ही सोचो, आप मान लो GTO, सबके सब इमेजिन करो कि आप सब GTO इमेजिन कर लिया। यस सर। यस सर। अब now try to imagine a situation that you are looking at a boy or a girl, whatever. She is not participating much. She's looking very dull. She's looking very, underconfident. She is not participating. There is no vibration around her. है ना? थोड़ी से अपने आप में lost है, indifferent है। तो आपको
आप उसके कौन कौन से ऑयल क्यूज बंद करोगे? मेंटल स्टैमिना, कॉन्फिडेंस, इनिशिएटिव, एआईजी, लाइवलीनेस बंद कर दोगे? यस सर। यस सर। जीटीओ के पास और कोई टूल तो नहीं है ना? डज ही हैव एनी अदर टूल टू नो यू apart from your behavior and conduct? He can't ask you questions. He can't create a situation for you to answer. He can't do that. He can't take a test. He can't tell you to write a story or something. Only way he is judging you is through your behavior and conduct. And that is only way people judge you. रियल लाइफ में लोग आपको कैसे समझते हैं? इन्हीं चीजों के द्वारा समझते हैं कि नहीं? यस सर। आप इस बात को समझ रहे हैं? व्हाट इज लाइवलीनेस? इसको यहाँ पे क्लोज कर देते ताकि आपको समझ में आए कि मुझे कैसे दिखना चाहिए। अनुश्री, व्हाट इज लाइवलीनेस डीआईपीआई डेफिनेशन के हिसाब से? तुम्हें याद है ना डीआईपीआई डेफिनेशंस? बताओ। नहीं तो भूल गई ना, थोड़े बहुत रटे थे बस। रटे थे? अच्छा चलो ऐसे जनरल बताओ, लाइवलीनेस का क्या मतलब है? तुम लोगों ने वो जो टेस्ट लिया था उसमें एक टेस्ट आया था एक्सट्रोवर्जन का, वही है लाइवलीनेस। तो क्या लिखा था उसमें? बताओ बताओ, लाइवलीनेस समझाओ, थोड़ा तो समझाओ यार। Sir, your willingness to participate in a activity. कॉपरेशन, कॉपरेशन है तो कॉपरेशन वाला रिपीट कर रही है। Sir, लाइवलीनेस the kind of atmosphere you create around या yourself. हाँ, द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर यू क्रिएट। तो उसमें जो एक्सट्रावर्जन का जो टेस्ट आया था ना तुम्हारा, एक्सट्रावर्जन क्या था? द पॉजिटिव इमोशंस यू क्रिएट अराउंड यू। पॉजिटिव इमोशंस यू क्रिएट अराउंड यू। आप अपने चारों ओर कितना पॉजिटिव, आप लोग क्या समझते हो एक्स्ट्रावर्जन का मतलब है कि यू शुड गो एंड मीट पीपल एंड यू शुड बी meeting everyone, talking to everyone. Why should you talk to everyone? If you talk to everyone on the road, you look like an idiot, नहीं? Yes, sir. समझ रहे हो दोस्तों? Yes, sir. यस सर। Extroverted doesn't mean that you speak to everyone. No, sorry, it doesn't mean that. Mistaken है आप लोग. Extroversion means the kind of ambience and energy you create around yourself. If you create positive ambience and positive emotions, the word is positive emotions around you, people will come and talk to you. Suppose you're going, आप जैसे मान लो सोसाइटी में जा रहे हो और बच्चे आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब आपके वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है। एनिमल्स आपसे कनेक्ट करते हैं, आपकी वाइब्रेशन पे करते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ। कई लोग इतना डल और रिपल्सिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं अपने चारों ओर, पीपल गेट रिपेल्ड। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? नेगेटिव एनर्जी, तो आप ये कंसेप्ट समझे, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी, Yes, sir. दैट इज लाइवलीनेस। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन बाय जाएं तो योर मींस द कैंडिडेट्स ability, और it is applicable to everyone at large, to stay buoyant. पहली बात तो ये कह रहे कि your ability to stay buoyant, मतलब आप buoyant है, आप में buoyancy है ना? जैसे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल में वर्ड यूज होता है ना buoyancy का, कि आप पानी में डूबे हुए नहीं, आप पानी में तैर रहे हैं। समझ में आया? Yes, sir. Your ability to stay buoyant and create a positive atmosphere around you, particularly when facing stressful situations. So when you are in a stressful situation, what kind of energy you create around yourself, that is liveliness. So when you are coming on the ground, you should come across as a very lively, vibrant person. अब ये आप सोच रहे हैं कि अगर मैं वहां पे ग्राउंड में लाइवली बन जाऊंगा और अदरवाइज आई विल स्टे वेरी डल एंड बोरिंग, डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? No, sir. Not possible. You can't fake it. Don't try to do that. Be that kind of a person. आप कई बार, many a times you are not lively because you're so much lost into thoughts. You're so much
self-judging yourself, you're so critical about yourself, you're not liking yourself, तो आप lively कैसे रहेंगे? बताइए, बताइए. Can you stay lively in a situation like that? No, sir. No, sir. So first and foremost thing, what is stopping you from liveliness is your own inhibitions, your own thought process, which is telling you, or you questioning yourself. You're so much lost into self-critical. You're so much self-judging. कि आप lively हो ही नहीं सकते. Mind is occupied there. So to be lively, first and foremost thing is you have to be very comfortable with yourself and create a positive atmosphere around you wherein people want to connect with you, and then you are a lively person. ठीक है? Yes, sir. And when you're on ground, otherwise also, you see, when is your GTO task starting? When does your GTO task start? When does your GTO start? Anyone tell me? The second day onwards. Third and Morning. A third day morning. After Third day morning, sir. like day. third and fourth, sir. Your GTO task Basically, second, third, and fourth. okay. Actually, your GTO task had started the moment you're screened in. Moment you're screened in, your GTO has started. Because your group is made, right? Yes, sir. You with Yes, sir. that group, there is an interpersonal relation in the group going on. It starts immediately after screening. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Now, what should be your conduct during in your group? Vibrant, positive. You should be very, accommodative. You should be listener. You should be, connecting with people positively, listening to their ideas, their stories, how many attempts they have given, what has happened, what has not happened. Talk about them. Listen to them. Create a vibrant atmosphere. Not that you don't talk to anyone. You keep quiet. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अभी मेरी बात समझ रहे हैं या मैं ऐसी बोले जा रहा हूँ? No, sir. समझ आ रहा है. समझ रहे हैं sir. Yes, sir. में डल डल से रहोगे. देखो कहते हैं ना कॉम्पिटिटिव, आपको ग्रुप में कॉम्पिटिटिव नहीं होना है. ग्रुप में कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं ना कई लोग. आप उस ग्रुप को अपना एनिमी मत समझिए. आप ये बात समझे? Yes, sir. Not your enemy. That group is not your enemy. That is your group. That is team spirit. You have to perform the task with the group, not against the group. आपको उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाना चाहिए. कौन रिकमेंड होगा नहीं होगा ये सब बात की बातें. आप बॉन्ड अच्छा बनाइए और उनको अपना एनिमी मत, कॉम्पिटिटिव मत होइए. ठीक है? Support people. Allow them, help them as much as you can in their journey of recommendation. By doing that, you open a lot of your OLQs, and that is what G2 is interested in. आप बात समझ गए अभी? धोनी बनना है आपको, टीम वाला बंदा, हाईली टीम स्पिरिटेड बंदा. समझ में आया? Yes, sir. ये नहीं कि आप ग्रुप में लड़ाई झगड़ा करने में लगे हुए हैं, किसी को नीचे दिखाने में लगे हुए हैं, किसी को, है ना, ऐसे मत कीजिए. आगे समझ में कर लेंगे आप लोग. Yes, sir. Yes, sir. तो लाइवली एटमॉस्फेयर होना चाहिए. लाइवली होंगे तो कॉन्फिडेंट भी होंगे. कॉन्फिडेंट होंगे तो आप ज्यादा एडेप्टेबल होंगे. पीपल विल बी मोर इम्प्रेस्ड बाय यू. योर AIG विल आल्सो गो अप. अंडरस्टूड द पॉइंट? Yes, sir. So now when you come back to group discussion, so generally what will happen in group discussion, he will give you 3 leads: lead 1, lead 2, and lead 3. It can be any topic. Let's say any topic. Let's say G20 अभी submit हुआ था. What can be 3 leads? Anyone make 3 leads on G20 summit? What can be 3 leads on G20 summit? Anyone? Economic benefits. It is. So climate factor. Sir, absence of USA. Forum to
create an alternative economic platform for developing countries like India. This can be one. Yes, sir. What can be इसका negative? Anyone? It may. Absence of USA. Huh? Manvendra? Absence of USA. It may annoy USA. The absence of USA, like US boycotted it now. इसका negative बनाओ. Is it may annoy USA, our traditional trading partner, है ना? That can be Global negative. polarization. और polarize, है ना? ऐसा कुछ. So let's talk about two leads. It's positive and it's negative. There are two dimensions of it. One can be a neutral dimension also, but topic हमने ऐसा लिया neutral बनाना थोड़ा मुश्किल है. So there are two dimensions of G20. One is it is good for India, another is good, not good for India. यही है ना? ठीक है दोस्तों? Yes, sir. Suppose you are speaking on lead one and you are with the idea that G20 is a good institute and we should be very careful and we should be very Josh type participate and this that. ठीक है? And there are people who are saying no, we should stay and we should not annoy USA and our economy will get ruptured, this that फलाना ढिकाना. ठीक है? Do not change the line of thought. आपका लाइन ऑफ थॉट क्या है कि G20 हमारे लिए बहुत अच्छा है. करेक्ट? करेक्ट? Yes, sir. अब आप इसको चेंज नहीं करेंगे. यू विल कंटिन्यू विथ योर लीड. ये नहीं कि कुछ देर के बाद आप लीड 2 पे बोलने लगे, फिर लीड 1 पे आ गए. इसका मतलब आप जो है थाली का बैंगन मत बनिए. इसमें आपको यू डोंट हैव टू अराइव एट एनी कंक्लूजन, राइट? यू जस्ट हैव टू डिस्कस, राइट? If you have to discuss, then stick to the point. That is what your determination is all about. Determination, mental stamina यहाँ पे दिखेगा, right? Yes, sir. समझ में आ रही है? So stick to your point. Don't change. पहली बात तो ये समझ जाइए, do not change the lead. Is it clear, everyone? Clear? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Second बात हो गई, it's a discussion. Second बात आप याद रखिए, it's a discussion. And it's, अनुश्री तुम ध्यान देना इस पे ज्यादा. It's not personal. पर्सनल नहीं है अनुश्री ये. आप समझ रहे हो ना मेरी बात? एक डिस्कशन Yes, है, एक sir. चर्चा है. पर्सनल आपकी वो जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं चल रही है. तो इमोशनल नहीं होना है. क्या नहीं होना है? इमोशनल नहीं होना. So what should be the approach? Approach should be what? If not emotional, then what? Anyone? Sir, Analytical. Rational. Rational. जो मैंने तुम्हें समझाया था रीजनिंग एबिलिटी में, आप इमोशनल होकर ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो क्या होगा? क्या दिक्कत आएगी राजशेखर? If you get emotional in the discussion, what will happen? How will you look like? Imagine that एक बंदा बात करते करते इमोशनल हो गया ग्रुप डिस्कशन में. कैसा दिखेगा वो? Emotionally weak. हाँ? Emotionally unstable. इमोशनल नहीं, वो कैसा दिख रहा होगा? एकदम उसका चेहरा तमतमाया होगा, गुस्से से लाल दिख सकता है वो. उसके हाथ पांव ज्यादा चलने लगेंगे, वो थोड़ा जल्दी जल्दी बोलेगा, वो स्टैमर मारने लगेगा, हकलाने लगेगा. होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. क्या क्या होगा बताओ कालीश्वरन? If someone got emotional in discussion, how will it look like? So like it seems overconfident and How will it look gives- like to the GTO? Just tell me. sir, their speech will be like more Okay. aggressive, sir. He will start missing words. His cheeks will get red. He will start using more of his hands. He will be coming to the edge of his seat. Can you see these changes when he got emotional while discussion? Yes, sir. Will he be doing all this? Yes, sir. No, sir. He will be doing all this. And एक another emotional हो गया, नाराज हो गया, तो वो क्या करेगा? Sir, धीरज,
If somebody got emotional and he is now angry with the group, so what will he do? Sir, he'll tend to stay quiet, sir. Behave arrogant. एक तो ये हो गया, एक साइड हो गया ओवर कॉन्फिडेंस वाला. किसी को एग्री नहीं करेगा सर. नहीं, दूसरा अगर वो नाराज हो जाते हैं ना कई He'll stay बच्चे, silent. वो चुप हो जाएगा. See, एक हो गया कि he is trying to prove his point, and slowly his body language is changing, his facial expressions are changing, and his words are missing, and he is speaking very fast. This is one dimension. Because he has become emotional about this person. Another emotional pattern can be that he will keep quiet, withdraw from the discussion. जाओ मैं नहीं बात कर. ये भी होता है ना? Sir, he will deliberately make him look disappointed. Disappointed. He will look disgusted. He will make faces, but he will not talk. In either way, will he look very ugly or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You understood the point, ना? Do not be emotional. It is not a personal discussion. तुम्हारी शादी अगर डिस्कशन नहीं हो रहा है कि नहीं नहीं मुझे ये लड़की पसंद ही नहीं है, लड़के से मुझे देखना ही नहीं, इसकी तरफ, वो बात नहीं है भाई. एक मामूली सा डिस्कशन है और रैशनल बंदा चाहिए इसमें. इमोशनल होके नहीं करना है. जीवन मरण की स्थिति नहीं आई है अभी. आया समझ में? Yes, sir. लाइफ में भी, in life also, do not get emotional over small things, guys. आपका देखना, आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज बदलता है. मोमेंट यू गेट इमोशनल अबाउट समथिंग, your body language changes. You tend to get more angry, you tend to get very frustrated, you look frustrated, you talk frustrated, you stammer, you don't do that. Be a rational person, talk rationally. Understood the point? Yes, sir. So your approach in life in general should be rational. Be a rational person when you are approaching any situation, particularly about your conduct. I hope this point is clear to everyone. Yes, sir. Stay morally involved. Involvement का मतलब जैसे कि मैं बार बार समझा रहा हूँ, you should listen what someone is saying, not only speak. Involvement means listen. Listening के कई सारे तरीके होते हैं. Nodding your head, your facial expressions, your eyes, your next point which you are going to speak should depend upon what you have heard. Then only it will look like a discussion. Am I clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सुन के बोलो, है ना? So stay thoroughly involved. Listen, speak, listen, speak. Your facial expressions, your body language, your everything is coming into the count here. Understood? Yes, sir. Third thing I say is augment the argument. क्या मतलब हुआ हर्ष? समझाओ मुझे. आर्गुमेंट द आर्गुमेंट समझा दो मुझे. कोई भी समझा दो. चलो हर्ष तो नहीं समझाएगा आज गुस्से में. No, sir, it's not. कोई भी समझा दो. Sir, it's like someone has said something in argument type. He have cut our points, so we have to be very logical with that. Yes. We have to logically Argument the cut its argument points. का मतलब है कि argument means whatever lead you are talking to, that is your argument. Argument का मतलब झगड़ा नहीं होता. Argument का मतलब that is your line. तो augment करो उसको. Add more points. To prove your point, add more points. To prove your point, don't shout. To prove your point, augment कैसे करेंगे? Add more statistics, data, facts. For that, you need to have knowledge, right? मेरी बात समझ में आ रही है अदिति? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Augment the argument समझ में आए? Augment the argument means whatever you have been speaking, augment it further with more knowledge. Understood the point? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Yes, अगर sir. आपके पास पॉइंट नहीं होगा ना तो आप गुस्सा करोगे, आप चिल्लाओगे. राजीव, you agree with me?
Rajiv, Yes, sir. Rajiv. do not shout. To prove your point, do not shout. To prove your point, add more points, add more facts. Yes, sir. Now, facts will come from where? From your knowledge. This is where reasoning ability comes into play. That's why I say your confidence is dependent upon your reasoning ability. Reasoning ability high, confidence high. Natural है ना? Yes, sir. आपके पास ज्यादा पॉइंट होंगे, आपको गुस्सा आएगा ही नहीं. आपको गुस्सा कब आता है? जब आपके पास बोलने को कुछ होता नहीं है, तो गुस्सा आ जाते हो. गुस्सा आपको सामने वाले पे नहीं, अपने ऊपर आ रहा है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने को. अब क्यों नहीं तुम्हारे पास बोलने को? बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी बट यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी. For you, preparing for SSB means Rassi Fatta Balli, but that is not what SSB is. Factor one should be open. That is your knowledge, your reasoning ability, your ability to understand things, perceive the situation, logically express your thoughts. If factor one is closed, what do I do with your abilities to solve some puzzles? It's of no use to me. Are you guys getting my point or sleeping? No, sir. Yes, sir. Sir. हाँ, एक सेकंड, एक लास्ट है, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे. लास्ट वन इज अग्री टू डिसएग्री. अग्री टू डिसएग्री. ये बहुत बड़ा काम का चीज है, हथियार है तुम्हारे हाथ में, जिसको आप रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हो. अग्री टू डिसएग्री. कैसे करना है इसमें? डू आई अग्री विथ यू? Yes, I absolutely agree with this point of yours, but what about this? So you agreed, but then you gave a counter and disagreed. Understood this point? Yes, sir. Yes, sir. जैसे कि हम इसी एग्जाम्पल में लिखते हैं, though USA has been a very good partner, it has helped us in trade, this that, but what about our honor? It has dishonored us and it has unnecessarily levied a lot of tax on our products. It's a humiliation as a nation. आपने क्या किया? अग्री करके डिसएग्री कर दिया. सामने वाला कुछ बोलने लायक नहीं रहेगा. इफ यू प्ले दिस कार्ड अग्री टू डिसएग्री, रियल लाइफ में भी यही करो. क्या एग्री विथ यू बट व्हाट अबाउट दिस? नाउ दिस अग्री टू डिसएग्री इज अगेन डिपेंडेंट अपॉन योर नॉलेज. खाली अगर आपके पास खाली दिमाग में कुछ है नहीं, खाली आप थथराई करेंगे जो बिहार में करते हैं. बिहारी कौन कौन है ग्रुप में भी? जी सर. आदित्य. तो आदित्य, बिहारी लोग में एक वर्ड है ना, थथराई. हाँ सर. तो थथराई करोगे तो थेथर लोगे. हाँ. थथराई करोगे तो क्या लगोगे? थेथर. तुम सब ने, आई डोंट नो, यू गाइस टेंड टू और यू लाइक वाचिंग दिस पॉलिटिकल डिबेट्स. देखा तुम लोगों ने? देखते हो? Yes, sir. तो एक आरजेडी वालों ने क्या किया, उन्होंने दो लड़कियों को हायर किया, जेएनयू वाली. तुमने उन सबको देखा होगा, राइट? One of them is Priyanka Bharti, another is some, I'm forgetting her name, कंचना यादव. नहीं देखा तो देख लेना, वो डिबेट देख लेना एक बार. मैं नहीं तो देखूंगा तो शेयर करूंगा कोई, ठीक है? अब ये लोग क्या करता था, ये लोग, one of the reasons why RJD lost so badly in Bihar is these two women. They used to do thithrai. They had no knowledge. So they used to come to very low level. So when you don't have knowledge, you go down on level. They used to go down, they used to get personal, they used to bring caste, they used to call names, irrespective of that person's seniority, his knowledge. And that's what took down the entire RJD as a credible. Because when your diplomat is like that, प्रवक्ता क्या है? डिप्लोमेट है आपके. अगर आपके डिप्लोमेट ऐसे हैं तो आप कैसे होंगे? बात समझे? तो थिथराई नहीं करना है दोस्तों. थिथराई करोगे तो मार खा जाओगे. थिथराई नहीं करना है. क्या नहीं करना है? थिथराई. लिख लोगे? यस सर. भोजपुरी से कुछ सीख लो, ये सीख लो, थिथराई समझ लो. थिथराई का मतलब आता जाता कुछ नहीं है और फिर भी लगे हुए हैं, डर रहे हैं बिना मतलब. कोई वीडियो तुम लोग को मिलेगा तो मैं तुम्हें शेयर करूंगा. You'll realize कि how bad that person looks if he doesn't know the subject and still keep shouting at the pitch of his or her voice. That person rather looks very ugly.
Understood the point, दोस्तों? यहाँ तक so far so good. Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. 5 points for your conduct, 2 points for your knowledge. Knowledge में I told you reasoning ability, power of expression. Power of expression is clarity of thought. Clarity of thought will come from knowledge. Knowledge के लिए you have to increase your reasoning ability. To increase your reasoning ability, you got to read a lot. Read, understand, analyze. Automatically your power of expression will go high. Doesn't matter what kind of English you're speaking, but clarity of thought should come out. What should be a conduct? Do not change the lead. Stick to your lead. It is a discussion. Don't make it personal. Be a rational speaker, not an emotional. Stay thoroughly involved in the discussion. Thoroughly. Right? Augment the argument. Add more values. Add more points. Do not keep repeating and shouting at the top of your voice. Agree to disagree. Use this technique to counter the other opponent. Agree to his point, but then disagree by logical explanation. In case of GPE, this will become agree to progress. In case of GPE, you can use this technique, but not to disagree, to progress. So you can say, okay, we will go by this manner. Let's progress it further. So agree to progress and further summarize. I hope it is clear to you guys now. Yes, sir. Okay. So now we have about 24 people, as I can see, or 25, whatever. So what I want is that decide a topic. Okay? Getting a point? 2 topics. That is for tomorrow, I am telling. So Deep Santan, Rajiv, Harsh, Aditya, Aditi, Anushri, Rajshekhar. 7. Kalishwaran, Prince, Prashant. 10. Dheeraj, 11. Manvendra, 12. ये 12 नाम याद हो गए? Yes, sir. So in this 12, there will be a topic. So I will tell Rajiv to prepare a topic and share it in the group for these 12. Understood? Right, sir. Yes, sir. Other group will comprise of Payal, Abhi, Muskan, and I'm not able to read other names. Aditya, I think. Whoever is left will go to the other group, Anushri and all those. ठीक है? Okay, And sir. Payal will make a topic for this group. ठीक है? Okay, sir. And you will put it in the group. So what topic you choose? Payal, you choose a national issue. Some of the guidelines can be new education policy, or you can talk about SIR. Make a topic on SIR. You can make a topic on new education policy, UCC, work bill, political, ये वाले topics डाल. UCC, SIR, new education policy. Choose any one of them. ठीक है? Okay, sir. And Rajiv can choose a geopolitical topic. So I think the topic for your group can be on you make it on Indo-US relations, sir. Indo-US relations में आप क्या divide करोगे? हाँ, you tariff war of USA on India. तो उसके 2 topic group बनाओ कि what should be the India's approach? What should be the India approach? India-US tariff war. India, what should be the India's approach? One is we should listen to USA and follow their guideline and do as they say. Second will be we should stick to our ground and we should rather find alternate options. 2 रीड बन गए आपके? Yes, sir. अब आप लोग इसको प्रिपेयर कीजिए, ये ग्रुप में डाल दीजिए, आप लोग प्रिपेयर कीजिए. तो अब इसमें से कल जब ग्रुप डिस्कशन होगा तो I will divide this group further into 2 sections, 6 and 6. 6 people will speak on lead 1 and another 6 will speak on lead 2. Understood the point? Yes, sir. Yes, sir. But you guys prepare both the leads. So that way we'll do a
ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। So the preparation for the points are individual efforts, right? Yes, yes. Only topic will be We told. won't have to How share to argument the argument, how much stats you put, how much data you put, that is all yours. Yes. And that will decide your performance also. Understood? Yes, sir. This is the job for tomorrow. Now, someone was asking something. Please tell me what is the question? Sir, actually, I was asking. Go ahead. While explaining, sir, you made a personal remark that चिल्लाना नहीं है, ठीक है, Rajiv. So was that a personal suggestion for me, sir? No, no, no. Of course. Okay, sir. I might be asking something to you. That's why. Okay, तो okay, sir. चिल्लाना नहीं है, अपने आर्गुमेंट को आर्गुमेंट करना है लॉजिक से, फैक्ट से। जीटीओ आपकी एक एक बात सुनता है। He is listening to you. He is monitoring you. More factual you are, more logical you are, more respectful you become. GD1 आपका अच्छा होगा, आप फैक्चुअल बातें करेंगे, आप अच्छी बातें करेंगे, धीरे धीरे आप ही बोल रहे होंगे, and everything will focus will shift to you, and you will become the hero, and GTO will put you on very high pedestal, and your group will also start treating you very positively. अब तक वो सोच रहे थे कि ये तो ऐसे ही है, और अचानक से BD1 के बाद देखोगे people have changed their attitude towards you. If it is good, then it will also boost your confidence. You are looking forward to the next task. तो बहुत फायदे हैं GD के, समझ में आ रहा है? Right, sir. Understood this point, guys? Any questions? I hope nothing more is needed. Have I shared? Have you sir, listened to that video of PGT? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Anyone who would not be? मुझे पता है कि अब बोलेगा नहीं कोई, तो अब मैं तुम लोग को एक चीज शेयर कर रहा हूँ, दैट इज GTO PDF, ठीक है? Yes, sir. ये वाले PDF में बहुत सारे अलग अलग तरह के कमांड टास्क के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। आप लोगों ने क्या करना है, यू हैव टू अप्लाई दैट नॉलेज व्हिच यू हैव गेन्ड इन दैट वीडियो एंड सॉल्व दिस। हाउ यू कैन यूज रस्सी फट्टा बल्ली, इन व्हाट वे, and solve it. Try solving it. Go through that video. Most of you will be able to do. Once you do this, you will have enough ideas how you can use your Rassi Fatta and Valli to make a bridge and cantilever and fulcrum. ठीक है, understood? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Any doubts? So this part we do. We'll see how we can handle it. Now tell me any questions? हाँ सर, जीडी के लिए एक क्वेश्चन था सर। लास्ट टाइम मेरा बैंगलोर में इंटरव्यू था, तो वहां पे हमारे 4 जीडी हो गए थे, और फिर भी जीटीओ पूछ रहे हैं डू यू वांट एनी मोर जीडीज। तो इसका क्या मतलब है? और ऊपर से सर हमारा पहले जीपी हुआ था, उसके बाद जीडी हुआ था, ऑर्डर ही उनने अलग कर दिया था। तो अगर वो बोल रहे डू यू वांट मोर जीडी, सो व्हाट शुड यू से? सर वो फिर हमने एक बार उनको हाँ बोला था, उनने 2 होने के बाद उन्होंने बोला और चाहिए, तो हमने एक बार हाँ बोला, तो उन्होंने हमसे टॉपिक पूछा और फिर वापस जीडी करा दिया, फिर वापस असेसमेंट कर लिया, फिर तो 4th वाले में भी हमने हाँ कह दिया। जीटीओ 2 थे क्या? हाँ सर, 2 जीटीओ थे उसमें तब। वो एक का ट्रेनिंग चल रहा है। अच्छा। बट अगर वो पूछ रहा है कि you want more GD, so you should always, as I told you, no, approach should be enthusiastic, जोश टाइप, ठीक है? हाँ सर, हमने हाँ ही बोला, बल्कि फिर उनने सजेशन लिए कि कैसे कैसे टॉपिक्स, फिर उन्होंने अलग अलग सोशल इश्यूज पे भी करा दिया, चाइल्ड मैरिज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें। समझ गए ना तुम? जोश टाइप बोलना है, समझ गए? यस सर। एंड सर ये ऑर्डर क्यों चेंज, ऑर्डर भी अलग हो जाता है क्या सर कहीं कहीं पे? आई एम रियली नॉट अवेयर, होना तो नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि हम भी पहली बार शॉक हुए थे सर उस चीज में कि इनने जीपी पहले करा दिया। ग्रुप बहुत बड़ा था क्या? नहीं सर, 9 लोग थे मुश्किल से सर, टोटल, पर एक्चुअली एक ही शेड था जिसमें डिस्कशन और वो सब हो रहा था वहां पे उस समय पे। तो हमें लगा कि शायद अवेलेबल नहीं है रिसोर्स इनके पास ज्यादा कराने के लिए जगह में। लॉजिस्टिक्स इशू कैन बी बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक्स इशू, ठीक है? हाँ सर, हमें भी वही लगा कि बारिश हो रखी थी उस समय पे ना, इसके चलते में क्या होगा, अदरवाइज होना नहीं।
अंडरस्टूड द पॉइंट? जीटीओ पार्ट समझ में आ गया? चलो यस सर। हमारे पास लेक्चरेट, आई होप लेक्चरेट में तुम्हें कोई डाउट तो नहीं है? लेक्चरेट में क्या डाउट है? नो डाउट सर। सर एक लेक्चरेट कैसे हेल्पफुल है इससे समझ जाओ। लेक्चरेट कैसे हेल्पफुल है कि कई लोग जीडी में, सपोज इन जीडी the group is not good, group is very annoying, group is not letting you speak, you're trying but group is not letting you speak. That doesn't mean you'll keep quiet, you keep trying. Okay, but lecturate gives you a confirmation. On what terms? Confidence, power of expression, your ability to handle pressure, speaking in front of a group. So lecturate can be a confirmation test for some of the doubts which are still left in the mind of GTO during group discussion. Understood this point? yes sir. Prepare as many topics as possible. As many topics as possible. Generally, you'll find if you start preparing, you will generally be able to speak on most of the things. What can be the categories? Geopolitical or international issues, serious issues, national issues, social issues, technology, technological advancement, falana dhimkana, and there can be a general topic. Love marriage, arranged marriage, love versus marriage, ऐसा कुछ छोटा मोटा टॉपिक भी हो सकता है। कौन सा टॉपिक आपको लेना चाहिए जिसपे आप कॉन्फिडेंट हो, आप वही लो। जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट, सपोज यू टेक अ वेरी टफ टॉपिक बट यू डोंट स्पीक देयर, you're not able to speak at it for 3 minutes, then all your effort will go waste. So even you take a simple topic but speak well and you show your power of expression, confidence basically, public speaking wala, so your job is done. Understood? So there will be people, your group will be sitting like this, you're standing here, GTO might be here somewhere. So you should look into the eyes of your friends. I mean, look directly into the eyes. Do not look here and there. Stand straight, विश्राम में खड़े हो, सीधा खड़ा हो, shoulders down. Look straight into the eyes of your fellow mates. Do not look here and there, and do not look at GTO at all. Understood this point? Yes, sir. Yes, sir. And always subdivide your topic into 5 parts. Very simple, I'll make it. Try to do it on any topic. 5 parts. First is introduction. Whatever is the topic, you give an introduction. So there are 3 minutes ka GTO, 3 minutes ka lecturate. Okay? You divide by 5. So 5 parts में divide करेंगे तो 45 seconds का एक part बनेगा, right? First part should be introduction. Introduce the topic. Not necessarily 45, it can be 50, it can be 40, it can be 35 also. Second part will be what led to the situation. Same TAT type karo. What led to the situation. So suppose the topic is US tariff war. So introduce what is US tariff war. Gentlemen, as you are aware that United States with its recent resolution has imposed a lot of tariff on Indian goods. This has been happening for last few months, and US has been imposing a lot of tariff, or what we may call as reciprocal tariff on majority of the economies, India being one of them. Initially it was 10%, but then further it was increased to 100% with the alibi that India is buying oil from Russia, which is creating a issue for escalating the war between Russia and Ukraine. ऐसा कुछ ठीक है? Now second is what led to the situation. Why this situation happened? Because India denied to agree to US requirement or request of not buying the oil from Russia. This is one of the reasons, right? Yes sir. Third part is what's happening now. What's happening now? Same like TAT, right? What is happening now? India has taken a firm stand and it has refused to agree to the US requirement of not buying oil from Russia and continues to buy oil from Russia because India firmly believes that Russia is one of the strongest allies of India and it is a country which will stand by
stand by us in the face of requirement. Moreover, economically, it is very good profitable business for India because India is able to buy the oil at a cheaper price and sell it at a higher price after processing. So economically also it is helping. Diplomatically also it is helping. So present state is that India continues to buy oil from Russia despite US requirements of country. Fourth is what are the outcomes? Same like TAT, ठीक है? What are the outcomes? The outcomes are that the trade deficit has happened. अब पढ़ोगे तो ये याद रहेगा. And the export to the USA has drastically reduced. It's going to cost us so many rounds of rupees or billions of dollars. So another alternate outcome, as India is trying to do, is to get into alternate markets, particularly Africa, also into Brazil, also into Argentina. Also, India is trying to build up or preserve its relation with China. India also signed a free trade agreement with UK. It is also eyeing various European countries and trying to diversify its goods to those countries, right? These are the outcomes. Yes, sir. And fifth is conclusion. Conclusion में क्या होगा कि gentlemen, this topic is a burning topic. However, what remains to be seen is कि economy cannot we cannot grow economically at the cost of our personal national sovereignty, right? है ना? And conclude the topic. So divide it in 5 parts. Introduce what led to the situation, what is happening now, and what are the possible outcomes, and finally conclusion. Same मैंने इसीलिए आपको TAT type बताया. These are the 5 variants you can use. Divide the subtopic. जब आपको 3 मिनट तैयार करने के लिए मिलता है, आप divide कर लीजिए mind में. Understood? Everyone? Yes, sir. तो इसको अभी हम practice करेंगे. I will be giving you topics then and there. You have to prepare. In the meanwhile, someone will speak, and you'll prepare, and then you to speak. ठीक है? This part we will be doing. Any points, anyone? Sir? So any one of you is ready for lecture it right now. If anyone is ready, tell me. I will give a topic. Me, sir. I can try, sir. if you want. Okay, Rajiv will be standby. Topic for you is same as we discussed. ठीक है? The Indo-US relations, sir. US tariff war. Tariff war. Yeah, someone was saying something. Sir, I was saying that my lecturate is good, I believe, because I also do it in colleges and other places. But my GD part is a little weak, sir. Yeah, I saw that. You don't speak only. You have to speak, Rashekar. देखो ऐसा है ऑप्शन क्या है मुझे बताओ कोई ऑप्शन है No, sir. तो ऑप्शन नहीं है तो जब क्या है ना जब पता है कि साला कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है तो डोंट let this thing because I seen your stories. There is tremendous, remarkable improvement in your stories. So just because of this inhibition, Rajshekhar, don't let this chance go. You know it will affect it. You know your PPDT is at doubt because of this. मत करने दो इसको. ये आपका विल पावर, मेंटल स्टैमिना, सब कुछ डाउट में आ जाएगा. You have to push it. इसका तेरे पास कोई solution नहीं है राजशेखर. You have to push it. Okay, sir. And the free topic for you is what topic you are ready? Anushri, you're there? Prince, you're there? Yes. Okay, Yes, sir. Anushri is there. Anushri, topic. What is your topic? You can speak right now. 3 minutes. Prepare it as per your choice. Aditya, you also prepare one topic. 3 minutes. Yes, sir. 3 of you. And Kalishwaran, are you ready for any topic? Yes, sir. Prepare it in your mind. We'll start with Rajiv whenever he's ready. Sir, do I have to switch on the camera, sir? Pardon, sir? Of course, you have to switch on the camera. Okay, sir. Give me 2 minutes, sir. Okay, 2 minutes. के बाद we'll start with Rajiv, followed by Anushri, then Aditya, and then Kalishwaran. ठीक है? And rest of you, please monitor, observe, and comment. ठीक है?
Done, sir. So shall I start? So Are we ready, guys? Rajiv, are you ready? yes, sir. Yes. Shall I Good. start, sir? Yeah. Good evening, gentlemen. The topic that I've chosen for my lecture today is Indo-US tax wars. So for the introduction part, I would like to explain that recently in the geopolitical dynamics, the USA and India, one of the largest democracies in the world, got into major trade tussle that we saw initiated from the US side, where the Trump administration deliberately started a reciprocal tax with all the economies which have complete access to its US markets, and in retaliation to the other markets which are not that much open to the US markets. And the first target was China and India. Now, here the part is India is already at trade surplus with America, and both of the countries are in a very good position in terms of uh, economic sphere with each other. Now, the thing is, according to the new geopolitical dynamism, and as we have seen that USA and Russia are an old enemies in the geopolitical dynamics. So, with the ongoing US-Ukraine war and the constant purchase of India of the crude oil from the Russia has been a triggering point for the Trump administration. By looking at this point, the Trump administration came up with a solution that we should opt to the retaliation tax, and this has been not been a very fruitful step for both the countries. And Indian market also saw a major inflation push. The diamond market also got a major hit in the Indian markets. थोड़ा ऐसे monotonous tone में आ रहा है, monotonous. Okay. So due to this step, the Indian markets also got a major push. Sorry, sir. Continue. I'm just watching. Okay. Due to this retaliatory step, the Indian market also got majorly hit due to these taxes, because the major commodities that were being imported from the US market also got really inflated, and the major drawback that was faced by the diamond market, as the costs were very much inflated, and in the return also the
cost of living in the US market also got really amplified. So the current scenario is that both the countries are at a plateau right now. Both the countries are trying to uh, be resilient upon their position, and the future terms are very much hopeful, as the both the administrations have conveyed that the situation will be brought down with necessary steps. Thank you. Thoda more energy, more vibrations. You have to engage the audience. Right, sir. Actually, sir, it is very monotonous environment, so otherwise I make eye contact with everybody. So I can make out you'll do well. And Anushri, go ahead. Yes, sir. So, good evening, everyone. Today's my lecture topic will be Uniform Civil Code. So, let's understand what is Uniform Civil Code. So, Uniform Civil Code is a primary law code, which means that the civil code that administrate those and implement the same secular law to the people, irrespective of their religion, their caste, their tribe, and it supersedes the rights of the citizen to govern under the different personal laws that has been based on the religion, caste, and tribe. And if we talk about the common areas that is being covered under UCC, it includes the administration of the property, marriage, divorce, and adoption. The main argument that is been favoring UCC is that it can unite India because Hindus and Muslim has been following the same Hindu customary laws, and some minorities of Muslim does not accept that laws, and because of which the Shariat Act was being passed on 1973. And according to the Shariat Act of 1973 was to was and continue to be the Islamic Shariat law, and it also take three main customary laws from the Hindu civil law. And the first is the Islamic Shariat law. It grants the Hindus that it grants the Muslims that it can transfer their properties to the or write their will. So it is one of the customary law that was being taken by the Hindu customary law. The second was the adoption law. The unmarried couple that who does not have the children, they can adopt. It was also being taken by the Hindu customary laws. And the third one, uh, I'm not remembering. So I would like to take it forward by saying that we all agree that the laws that is being made according to the religious customary laws is it does not treat women and men as equal, and that means polygamy, unfair inheritance, and unfair divorces. Law must not be allowed in this community. No religious law is able to override the fundamental principle of the equality. We can even see that the religious law is treat women as secondary people. So I think this should not be there. And so I would like to conclude by saying this that uniform civil code is necessary to ensure the equality between men and women. And You started well, the facial expressions were good, everything was good, but then what happened? The backup knowledge didn't support you. yes, sir. Got confused. There are a lot of things you can talk about UCC. Sharia law, I don't know what you're talking, but there is a major Shah Banu case. If you have read and understood, there is a movie made on it now recently. Shah Banu case was a turning point in Indian history that we reversed the Supreme Court judgment to support Sharia. It's the first incident which has happened in a democratic country. So why UCC is important, we can learn from Shah Banu case straight away. Yes, sir. But everything was otherwise good. Nice. So more practice, more practice. Yes, sir. It can be a turning point in your GTO. You're not realizing. This small lecturate can turn around your GTO, I'm telling you. You were not able to do much in GD. You're not expressive enough. You couldn't give points. But lecturate went bang on. And you could, impress the GTO कि बंदी में दम है. वो पूरा GTO का तेरा जितना इशू था वो सब माफ कर देगा. नहीं दम है इसमें. वो कर नहीं पाई. Yes, sir. As well as a confirmation test lecturate. So maybe there was a certain elements you could not. But here you have a chance. Make the best use of it.
Take lecturate very, very seriously. I'm Yes, sir. telling you, a moment can change your life. A moment can change your life. Remember this. ठीक है? Yes, sir. Aditya. Yes. So good evening, gentlemen. So the today's topic for lecture is India-Russia relations, and I'll be briefly covering it in three parts. I'll be talking about the history of our relations. I'll be covering what is currently going on between the relations of India and Russia, and later on I'll be covering what can be the future outcomes. So, as long as we known, since the era of Cold War, Russia has been our greatest ally. Even during the 1971 war, it stood by us like a concrete. So we can say we are very close to Russia in terms of defense ties as well as strategic ties. Not only this, now we are also covering the global trade ties as well. So coming on to the next, that is how the present situation of India and Russia is. So as we can see that India buys a lot of oil from Russia. In fact, it is the second highest buyer of oil from Russia. So we can see there is a lot of trade happening between India and Russia. But due to that, some of the Western sanctions are also put on India. So it has some contemporary measures as well. A very long defense tie-up. From buying, almost 70% of India's defense inventory has is contains Russian components, and we are also co-developing many of their weapon systems with Russia. We have shared our knowledge based on BrahMos missile, and they have even offered us Su-57 along with the technology transfer. So I think that is a very crucial moment in our defense ties. But also in this again comes the sanctions from the West. So I think from defense and global trade good because this creates a trade deficit between us and Russia. And also the Western countries are looking at in a way that it can be Okay, Aditya. in a very demeaning aspect. So Nice. Everything good. Everything good. Perfect. No issues. Okay. Right. Kalishwaran. Sir, can you hear me? Yeah, go ahead. Yes, sir. Go ahead. Go So ahead. yes, Go ahead. Go ahead. You're audible, visible, both. Go ahead. yes, sir. Sir, today my topic, my lecture, the topic is in India-China dispute and the historical aspects, sir. So as we can see, the India has a diplomatic relationship between India with China for 75 years. So we majorly see a lot of territorial issues like the Askai Chin area and like the western part of India, a western sector, and the eastern sector of India, like Arunachal Pradesh and Sikkim and the Ladakh region. So as we all could see that they have building G219 kind of road, and they are extending their infrastructure to extend their infrastructure and making the airstrips roads, and this makes tension between our India and as well as the China on the aspects of defense. So as this has started way back 1,000 years ago, and they have it is said that the Tibetan emperor who got have internal clash in between the Tibetan emperor itself, and the Tibetan ruler also claimed that he take the Aksai Chin and the Ladakh region previously. So from that till now, we are facing a lot of issues due to the British Raj, and as well as there is a kind of an history like the British and Russia had fought during 1945, and the war called Great Game. So where they declared a Johnson kind of line temporarily between inside the outskirts of the Ladakh, and which made the China to more get more aggressive, that
the British have marked the line for their purpose for trading between like the Russia and the India, Russia and the British India. So by this way, China thought that Johnson line could make them more vulnerable for their borders and all. So as what's sir? Is the line named Johnson line or something else? Yes, sir. It's Johnson, sir. It's like so I heard like geographical. Is it not McMahon line? So it's in so it's a previous thing, sir. It's a history, sir. McMahon line is between Arunachal Pradesh and Yeah, Johnson line is there. yes, sir. Oxide chain area and yeah. ठीक है, factually you're correct. थोड़ा और energy चाहिए, थोड़ा और vibration, positive, positive, थोड़ा और जोश टाइप. It was good attempt, not bad. But as you might have said, कि as the lecture progresses, the energy goes down. Yes, sir. वो नहीं होना चाहिए. Should engage the audience till the end as far as possible. ठीक है? But I have idea, sir. But I don't know how to structurize the things, I sir. told you na, that what led to situation, what is happening now, what are the possible outcomes, and what is the conclusion. What led to the situation as it is Johnson line is a situation why they took the Oxygen area. Okay, sir. What led to the situation? What is happening now? Right now, there is a stalemate which has been maintained. There is a line of actual control being maintained. There is an agreement. There is a bilateral agreement. There is a defense agreement. We are trying to maintain that line, and both the forces have also tried to neutralize. They have gone back. A neutral buffer zone is created, and we're maintaining it. What are the possible outcomes? A further truce can happen. A further final decision can be taken, and the existing line of control, actual control, can be made into line of control. LOC. Yes, sir. And what is the conclusion? The India, their neighboring countries and economies, they should coordinate with each other, prosper each other together, this, that, and movement should be there in that direction, right? Yes, sir. Okay, sir. So with structure, you follow that same TAT structure, you won't have any confusion. You Okay, can sir. debate every topic in that manner. Okay, sir. Sure, sir. Anybody else want to try? We have 10 more minutes. Anybody? Any topic? Anyone? Tell me, guys. No? I know. Any other question bothering you guys related to TAT? Any question? Tell me now. TAT को लेके कोई डाउट बचा है किसी के दिमाग में? कुछ भी? SRT, TAT, VAT, anything? Tell me. So blank story. Blank story. Let's cover that part. Screen visible? Yes, sir. Blank story. First thing that you need to understand is why blank story? Anyone? Those who have been, why blank story? Anyone? Why blank story? Anushri, why blank story? Payal. So because it like it tells you how you think, irrespective of the picture that is being shown to you. Like in general. No. So this blank story, we will be influenced by the previous stories and we write something new. No. सर ब्लैंक स्टोरी साइकोलॉजिस्ट को ये दिखाती है कि ये इंसान कैसा लिखना चाहता था और इसने कैसा लिखा है. No. Sir, they want to know about our real life experiences. No. See, all of you don't know. I don't know where you have got the training, but you don't know this basic thing, why there is a blank picture. Let me explain it to you very clearly. You all will immediately understand. What has happened is you are writing 11 stories. One after another, you are writing. So what is happening? Your subconscious mind and unconscious mind is very much activated. Are you getting the point? You're going to your unconscious mind, you're coming out of it. You're going to unconscious mind, coming out of it. You're going to subconscious mind, coming out of it. Subconscious mind, in, out, in, out. So your unconscious mind is therefore extremely charged. You can write this word, extremely charged. Understood this point? Yes, sir.
Everyone understood this point? What I'm saying? Your unconscious mind is extremely Yes, sir. charged. It needs a break. It needs a break. How do I give this break? So I give you a blank slide. Now your unconscious doesn't get charged because it's blank. So there is a gap. There is a gap of about 10 minutes from the last to the next. Because last time you saw a picture, you wrote a story, now there is no picture. So, and by the time you finish writing in another 5 minutes, so there is a 10 minutes break. To settle down your unconscious mind, this blank picture is there. The question comes, is blank picture used for evaluation? Anyone who would like to answer? Yes, sir. Yes, sir. Oh, no, blank picture, no evaluation, no evaluation. Psychologist evaluates your personality through 11 pictures, not through 12 pictures. It is just a break. Okay? So why this break is needed? To give you a break, settle down your subconscious, unconscious mind, because the next test is of VAT. So you should be ready for that. What should you write in this? Write your own memory. Related to your PIQ. You guys keep saying, sir, my story should relate to my PIQ. Here it should. You're part of NCC, you did some camping, you were head of something, you organized something, you played some tournament, XYZ, whatever good memory of yours, you should write. What will happen when you write a good memory of yours, your subconscious mind settles down. You feel good. And now you're ready for the next test. Understood this point? Yes. Understood this point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Your own story, your positive story, not negative story, wherein you did something extraordinary. It can be organizing something, it can be participating in something, anything wherein you feel that you accomplished something great. Understood the point now? Why it is there? That part is also understood, right? Any queries? बोलो अभी. No, sir. No, sir. तुम लोग को सच में नहीं पता था कि ब्लैंक स्टोरी क्यों होती है? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Just give me a break. 1 minute. Okay, guys, got it now? Any questions on blank story? No, sir. Chalo then, that's all. Tomorrow we meet with So, I have one doubt related to strengths and weaknesses, sir. Tell me, please. So, in the weakness part, I was thinking of writing something like this: "Ki I'm not ardently ready to take help, sir." You So, first have I shared model strength and weaknesses in the group? yes, or sir. not? मैंने वो उसके थ्रू go through तो कर लिया है उसमें. तो आप अपना बना लीजिए
फिर जब मैं आपका इंटरव्यू करूंगा ना, आई विल बी एबल टू हेल्प यू मेक योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ओके सर। मैं आपसे पूछूंगा, उसमें सवाल में जरूर आएगा घुमा फिरा के। उसके बाद जब मैं डीब्रीफ करूंगा तो आपको आई विल हेल्प यू आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस आल्सो एंड हेल्प यू, and then I will tell you, keep just talk about these weaknesses. That will be your weaknesses only, natural also. ठीक है? ओके सर। So not to worry about it. ठीक है? राइट। सर एक और डाउट था। हाँ। सर जीपी में जब हम जीटीओ को आखिरी में जब नरेशन देते हैं, मतलब स्टोरी बताते हैं, मतलब जो हमने प्लान बताया, उसमें कई बार जीटीओ लॉजिकल क्वेश्चंस पूछता है, तो हमें ग्रुप के प्लान पे अड़े रहना है या लॉजिकली उस चीज को आंसर करना है? सर से डायरेक्टली सवाल पूछना है, बिल्कुल आप डायरेक्टली आंसर दीजिए, अब ग्रुप का कोई मतलब नहीं रहा। ओके, क्योंकि कई बार वो पूछ लेते हैं उस चीज में लॉजिकल, तो हमें लॉजिकल देना है ना हमेशा आंसर उस पे। जो आपको सही लगे उसमें। ओके सर। स्टोरी आपने ग्रुप की सुनानी है। अब जब जीटीओ 1-on-1 आपसे हो गए, जनरली होंगे नहीं, बट मान लीजिए हो गए, तो आप बिल्कुल हाँ सर, वो पूरा जैसे हम बता देते हैं ना प्लान, उसके बाद वो क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा तुम्हें यहाँ से ये गाड़ी नहीं मिली सपोज, तो तब तुम क्या करोगे, वो आप ही वैसा टाइप्स। यो आपको देना है, ग्रुप नहीं देगा आंसर। अब ओके, हाँ मतलब हमें अपने लॉजिक के हिसाब से देना है ना सर? लॉजिक के हिसाब से आपको देना है ना? ओके ओके, ठीक है सर। हाँ, अब ग्रुप तो है नहीं आपको सपोर्ट करने के लिए, यस सर। है ना? ठीक है, चलिए फिर कल मिलेंगे दोस्तों, कल डील करेंगे और लेक्चरेट कुछ करेंगे बचे हुए, और मैं आपको थोड़ा सा आई विल गिव यू द टिप्स अबाउट पीजीटी। आप मेरी अगर बात पीजीटी में ध्यान में रख लेंगे, सुन लेंगे मुझे अच्छे से और अप्लाई कर देंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, यू विल बी द बेस्ट इन पीजीटी। आपको कोई जरूरत नहीं रस्सी फट्टा बल्ली करने की। बट हाँ, वीडियो जरूर देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए, और ये जो मैंने आपको टेस्ट दिया है, ये कमांड टास्क वाला जो पीडीएफ दिया है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए पेन से, दिमाग लगा लगा के, हाउ कैन यू मेक अ ब्रिज, ठीक है ना? बट फर्स्ट यू वॉच दैट वीडियो, देन ओनली ट्राई। इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, वी वॉच इट अगेन। डन? डन सर। Yes, sir. Yes, sir. एंड कीप राइटिंग, आई विल शेयर वन मोर टीएटी पीडीएफ, ठीक है? बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय सर। Bye, sir. Sir, good night.